इट डज़न्ट मैटर कि आपकी प्रेजेंटेशन एक हफ्ते में है, 3 दिन में है या कुछ घंटों में है. व्हाट मैटर्स कि आप उस प्रेजेंटेशन के 24 आवर्स पहले एग्जैक्टली क्या करते हो. हम सबके साथ ऐसा होता है कई बार कि लास्ट मिनट क्लाइंट प्रेजेंटेशन आ जाती है या कोई असाइनमेंट आ जाता है, कोई सोशल सिचुएशन आ जाता है या इंटरव्यू आ जाता है नेक्स्ट डे, एंड बहुत बार हमारे हाथों में टाइम नहीं होता इन ऑर्डर टू सिट एंड प्रिपेयर. इफ़ यू गेट लाइक अ वीक और अ फ्यू डेज टू प्रिपेयर देन यू आर वेरी लकी. बट हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार पब्लिक स्पीकिंग के सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपके पास होते हैं 15 मिनट, 30 minutes just to go through the presentation, and these 15 minutes are the time that you're spending while commuting from point A to point B, and sometimes it is 15 minutes that you get before everybody gets inside the conference room. So if you're also stuck in a situation like this, then you don't need to worry. I've been speaking in public for the last 14 years, and these are my 5 best tips. Now the number 1 tip is to skim through your pages, your notes. अगर आपको कोई presentation करनी है then 5 minutes में just skim through every single slide, every single word, and try to understand कि वो presentation में exactly है क्या. I do not expect you to pay full attention on the slides, because then it will increase your stress and then you'll be like, oh my god, I have to remember so many things. And whenever that fear creeps in, your memory will not be your friend, and जो भी आपने पढ़ा है या देखा है वो सब भूल जाओगे. So this time that you have at hand, you simply just run through the slides as if you're checking somebody else's presentation, as if you're simply reading a book. Go through all the slides, all the facts, all the figures. Once you're done skimming through your text, your speech, your slides, whatever it is that you have at hand, the second point is to start making notes. Now, I don't expect you to make long, lengthy notes. Don't do that. Just highlight keywords, facts, points, anything that is important and that has to be remembered. It can be data figure, it can be key points, phrases, any concerns that you have. So once you have made those notes, I expect you to make like a word cloud. A word cloud is just like a large cloud where you put in all the important texts, all the important words, and small things that you want to make sure are a part of your presentation. But just that, nothing more than that. Just small words, phrases, anything that you need at the tip of your fingers. Now, once you're done with skimming through the speech, you're done with getting the keywords right, the third point is to sit down and discuss the presentation, the speech with your team. Now, what do I mean by that? I mean कि जितनी भी slides हैं आप बैठ के अपनी टीम के साथ डिस्कस करो. In case you have more speakers with you, आप उनके साथ डिस्कस करो ताकि एक बहुत ही रिलैक्स्ड, एक बहुत ही कैजुअल सा एनवायरनमेंट हो सके. अभी whenever we had presentations like those, जब हमें पिच मिलती थी like around 11 o'clock at night and we had a presentation next morning, हम बैठ के रात को पूरी टीम हम बैठ के डिस्कस करते थे कि स्लाइड 1 में क्या है, स्लाइड 2 में क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, क्लाइंट की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है. तो ये जो भी डिस्कशन होती है, कई बार आपको लगता है कि इट्स अननेसेसरी है, इसमें बहुत एंजाइटी हो रही है, बट दिस डिस्कशन एक्चुअली मेक्स इट नॉर्मल, राइट. इट मेक्स द बॉडी फील नॉर्मल कि जो भी हम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, राइट. सो इफ़ यू आर द लीडर ऑफ द प्रेजेंटेशन, आई अर्ज you to be the most relaxed, because if you're relaxed, if you have control over your nerves, then the rest of your team will give a better presentation because they'll be relaxed as well. Also, जब आप discuss करते हैं ना लोगों के साथ these points or anything that is remotely related to your presentation or your speech, your body automatically calms down. And कई बार these people while discussing will raise points which will be important for your presentation itself. कई बार discuss करते करते कोई ऐसा point मिल जाए which you feel will entirely change the emotion of your presentation or your speech. या कई बार आप कुछ गलत बोल रहे होते हो या कोई चीज़ होती है जो शायद ऑडियंस आगे चल के पिक कर पाती. अगर आप डिस्कस करते हो तो आपको वो सब चीज़ों का भी पता चलता है. So discussing your speech, discussing your presentation is extremely important. Now, this is my favorite, absolute favorite. Point number 4 is when you are in the meeting room या जहाँ पे भी आपकी presentation है, अगर आपको notepads दिए गए हैं और any kind of things that you can write on, it's fine. अगर notepad नहीं है, carry your own notepad or just write on the notes app of your phone. Now here, I want you to revise your entire speech. Just like हम एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करते थे जितना भी पोर्शन है, कोर्स है, सेम वे में I want you to revise whatever you have to speak. Revise about the important aspects of your presentation. जो आपने keywords या notes बनाए थे उनको बिना रेफ़र किए लिखो, right? So when you revise by writing, ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि if you have the notepad right next to you, if you forget something you can quickly refer and that's allowed.
If you're in meetings, you're giving speeches, any presentation, it's totally okay to refer to the course content because nobody wants to listen to a speaker जो पूरी की पूरी content जो है वो रट्टा मार के आया है. We all want speakers who are more human, right? Who are intelligent. ओके सो व्हाट वी वांट कि आपकी जो नोट्स हैं वो एक्जैक्टली आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ताकि अगर आप रेफर भी करें तो ऐसा क्लियरली ना लगे कि आप पढ़ के बात कर रहे हैं. यू कैन क्विकली रेफर टू योर नोट्स एंड कॉन्फिडेंटली लुक एट देम एंड लुक अप एंड यू कैन कंटिन्यू योर प्रेजेंटेशन. दिस विल एंश्योर कि कोई की पॉइंट या फैक्ट भूलने की वजह से बीच प्रेजेंटेशन में आपका कॉन्फिडेंस ना कम हो जाए. रिवाइज करते वक्त ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट हो ऑन दैट सब्जेक्ट मैटर. मैंने इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात की थी इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़ विच आई बी लिंकिंग इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर आई टॉक अबाउट imagining yourself as an expert. So जो आप रिवाइज कर रहे हैं, feel like you're the expert of that subject matter, that people are there to listen to you, that people are there to understand you, right? And when you believe that you are an expert and you know like a tad bit more than the other people, then your confidence will be all time high and people will feel that energy and will be more inclined to listen to you. Last and the fifth point is to immerse yourself in the emotion of success. मैंने अपनी previous videos में भी इस बारे में बताया कि कई बार जो emotions है ना, अगर आप उनको swap कर दें तो automatically you start feeling more confident before your presentation. So prepare for success. Imagine success, imagine achievement and swap your emotions. For example, अगर आप anxious feel कर रहे हो, swap it with excitement. अगर आप nervous feel कर रहे हो, swap it with anticipation. अगर आप fear feel कर रहे हो तो swap it with trust. It's all about swapping one emotion for the other that immediately tricks your brain into thinking that, you know what, I'm not scared, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड. एंड जब आप फील करते हैं ना फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो पॉइंट्स अंदर से आते हैं. कई बार कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जो आपने नोट्स में नहीं बनाए होंगे, स्लाइड्स में नहीं लिखे होंगे, बट कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा. व्हेन यू फील दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन एंड व्हेन यू स्विच योर इमोशंस फ्रॉम वन वेयर यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ to the one in which you believe yourself, your speech will be so impactful कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि you had simply 15 minutes to prepare. Quickly running through all the points that I made in this video, the number one thing is to skim through your presentation and not read it word by word, but skim through the presentation. Second is to make notes. Third is to discuss the entire speech and presentation with your team or with yourself if you are doing the presentation alone. If your speech is a solo speech, do it with yourself in front of a mirror or in a meeting room or in the restroom, wherever you are comfortable. The fourth point will be to keep a keypad where you can jot down all the points and refer whenever you need, so that you don't stop in middle of presentation. There are people जो कई बार बहुत सारी presentations बनाते हैं ना go, so it's difficult to remember the content of every presentation, but having a notepad handy will really help you a lot. And fifth is swapping the emotions and immersing yourself in success. If you like the video and the points that I made in the video, then do not forget to like, subscribe, hit that bell notification so that you don't end up missing any of the videos that we make on this topic. Do not forget to check out previous videos which have been made on the similar topic, and I'll see you next time in the next video.